কেইবাটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এই বুলেটিনৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এডিআৰই কাট অফ মাৰ্ক সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে হাই হোৱা লো হোৱাটো ডিপেণ্ড কৰে যে কিমান পোষ্ট আছে গতিকে কাট অফ মাৰ্কটো লো হাই কোনেও নকৰে যদি 5000 পোষ্ট আছে 5000ৰ বিপৰীতে 10000 মানুহ অৰেলত আহিব গতিকে 10000 হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইটো কাট অফ হৈ যায় কাট অফ মাৰ্কটো হাই আৰু লো কোনেও কৰিব নোৱাৰে এইটো মেৰিটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বেছি যদি চোকা ল'ৰা 10000ৰ ভিতৰত সোমাই যায় তেওঁলোকে কাট অফ মাৰ্কটো উঠাই দিয়ে এবাৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে জলসিঞ্চন সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে আৰু ভেকুলিৰ বিয়া কিমান দিনলৈকে পাতিব লাগিব বুলি বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰশ্ন কৰিছে মই এতিয়ালৈকে এখন বিধানসভাত মই এমএলএ হোৱাৰ পৰা ইয়াৰ আগতে 3টা এই বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ আৰু এটো হ'ল মোৰ চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন মই নেৰানেপেৰাকৈ জলসিঞ্চনৰ ওপৰত অসমত কিমান জলসিঞ্চন বা পথাৰত পানী যোগান হৈছে এই প্ৰশ্নটো কৰি থকাৰ কাৰণটো এটোৱে যে সঁচাকৈ যদি অসমখন ধনী ৰাজ্যত পৰিণত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্যখনক ৰাউণ্ড দ্য ইয়াৰ কাল্টিভেশ্যন কৰা ৰাজ্য গোটেই বছৰত খেতি কৰা ৰাজ্যত পৰিণত কৰিবই লাগিব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বশতঃ আজিৰ দিনটোতো আনকি শালি খেতিটোৰ কঠীয়া পাৰিবৰ কাৰণেও বাকীটো বড়ো বা আহু এইবিলাকৰ কথা বাদেই দিলোঁ শালি খেতিটোৰ কঠীয়া পাৰিবৰ কাৰণেও এতিয়া আমি আকাশৰ পিনে চাই থাকিব লাগে আৰু শেষত যদি বৰষুণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া মানুহে ভেকুলীৰ বিয়া পাতিব লাগে আজিৰ দিনটোতো অসমীয়া মানুহ ভেকুলীৰ বিয়া পতা কুৱেশ্যনটো কৰক এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে কেতিয়াৰ ভিতৰত অসমৰ 100% কৃষি পথাৰত 100% জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে বাস্তৱতে জলসিঞ্চন বিভাগে কি আঁচনি লৈছে আৰু তাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট সেই আঁচনিবিলাকৰ কাৰণে কিমান টকাৰ আবণ্টন হৈছে স্পেচিফিক উত্তৰ আমাক লাগে যাতে অতি সোনকালে আৰু কোন চনৰ ভিতৰত 100% জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা হ'ব অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো ৰণবীৰ এলাহাবাদিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'বলগীয়া হ'ল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত উল্লেখ যে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি ৰণবীৰ এলাহাবাদিয়া ইতিমধ্যে বিতৰ্কৰ আওতাত সোমাই পৰিছে ৰণবীৰ এলাহাবাদিয়া এই মুহূৰ্তত এখন বাহিৰত আহি উপস্থিত হৈছে ৰণবীৰ এলাহাবাদিয়া ইয়াত এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কাইম মাজত ভৰ্তি হৈছেই যিহেতু আজি উপস্থিত দেখুৱাইছোঁ এয়া ৰণবীৰ এলাহাবাদিয়া আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এবাৰ মহম্মদ শামী সন্দৰ্ভত শামা মহম্মদে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মহম্মদ শামী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শামা মহম্মদে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে In Islam there is very important thing during Ramzan is when we are traveling we don't need to fast so one Mohammad Shami is traveling he's not in his own place number two he's playing a sport where he can be very thirsty and nobody insists that when you're playing a sport that you have to fast number 3 the Holy Quran before we start a surah it says Bismillahir Rahmanir Rahim in the name of Allah the most gracious the most merciful so every surah starts with Rahman ar-Rahim the most gracious the most merciful Allah so Allah subhanahu wa ta'ala will definitely have mercy on these things these are not things which he will not forgive you it is your deeds which are very important also and it's a very scientific religion as you know that mathematics has come through Islam
the first surah which was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through Angel Jibril by Allah Ta'ala was Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. That is Surah Al-Alaq. Means the first line, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq means read in the name of Allah. And the second verse says, I've made man from out of a clot of blood. And that is very scientific, because when the ova and the sperm come together, I'm a doctor myself, it's the first trimester is a clot of blood. So everything is there, and it's a very modern scientific religion, and you have to look at it in that way. এবাৰ জনাব বিচাৰিছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শেহতীয়াভাৱে চৰ্চাত আছে অন্য এটা বিষয় গৌৰৱ গগৈ এবাৰ 2026ত প্ৰকৃত খেলা হ'ব বুলি কৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তালাপ হ'ল নৱপ্ৰজন্মৰ লগত আৰু আমি গম পাইছো যে আমি ৰাজনীতিবিদ কেতিয়াবা বাস্তৱ বিষয়ৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছো নৱপ্ৰজন্মই সুধিছে যে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এডভান্টেজ আসাম উদযাপন কৰিলেও আমি নৱপ্ৰজন্ম বৰ্তমান শিক্ষানুষ্ঠানৰ যি অভাৱবোৰ আছে আমি কেনেকৈ এডভান্টেজ ল'ব পাৰিম এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে তাৰ স্পষ্টীকৰণ পোৱা নাই বা মহিলাসকল নাৰীসকলৰ নাৰী নিৰ্যাতন লৈ কিমান তেওঁলোকে চিন্তিত বা আজি যিদৰে ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গছ গছনিবোৰ কৰ্তন কৰি গৈ আছে নৱপ্ৰজন্মই যে সন্তুষ্ট নহয় এনে ধৰণৰ কাম লৈ আজি সেইটোৱে মই প্ৰমাণ পাইছো যে ময়ো এজন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যে মূল যে বিষয় আছে তাৰ পৰা বহুত আঁতৰত আছো মোক নিজে অধ্যয়ন কৰা উচিত নিজে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আৰু এনে ধৰণৰ বাৰ্তালাপ কৰাটো উচিত আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ লগত লৈ এটা নতুন অসমৰ পৰিকল্পনা কৰাটো উচিত বিধানসভাত এটা চাওক এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে এইটো ক'ব লাগে যে তেওঁলোকে কি কৰি আছে আৰু চৰকাৰৰ ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত বিফলতা ক'ত গোটেইখিনি কথা ইয়াত ওলাই যাব লাগিছিল মই ভাবো আমাৰ ভূমি অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই যি ভ্ৰমণ কৰিছো আমাৰ বানপানীৰ কাৰণে বহুতৰ আমাৰ মাজুলী মানুহবোৰ যোৰহাটলৈ আহিবলৈ হ'ল আমাৰ ডিমৌ অঞ্চলত বহুতৰ আমাৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি মাটি গৰখনীয়াত গুচি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ ভূমি অধিকাৰ নাই ভূমি পট্টা নাই বাগানৰ শ্ৰমিকসকল ইমান বছৰ তেওঁলোকে কষ্ট কৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত ভূমি অধিকাৰ নাই এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি যিমান আমাৰ বসুন্ধৰা 1 2 3 যি নামত হওক কিন্তু যিদৰে ৰাইজক ভূমি অধিকাৰটো দিব লাগিছিল ক'বাত আমি ব্যৰ্থ হৈছো চাওক আমি আমাৰ এই বছৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচন আছে তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত হৈ আছো তাৰ বাবে আমি জ্ঞাত আমাৰ ৰাভা মিচিং পঞ্চায়ত আৰু বিটিআৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে ইয়ালৈ আমি প্ৰস্তুত ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ ভিতৰতো আমাৰ কামখিনি চলি আছে আমি প্ৰত্যেক নিৰ্বাচন গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছো কিন্তু আমি জানো যে বিভিন্ন নিৰ্বাচন থাকিব কিন্তু মেইন ফাইনেল খেলটো 2026 চনত হ'ব আৰু তেতিয়া খেলা হ'ব মই ভাবা নাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত চাওক ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টিটো যোৱা তেওঁলোকে লোকসভা তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণৰ নিৰ্বাচন খেলিলেই অহা বছৰ টিএমচি বেংগলত নিৰ্বাচন হ'ব তো টিএমচিৰ লগতো আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক যে থাকিব মই নাভাবো কিছুমান দল আছে যাৰ লগত আমাৰ এটা মধুৰ সম্পৰ্ক সকলৰ লগত আছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি নিশ্চয় আমি কাম কৰিবলৈ এটা সুযোগ পাম আমাৰ চৰ্চাখিনি চলি আছে আৰু আমিও জ্ঞাত যে কংগ্ৰেছ দল নিজকে আৰু সবল কৰিব লাগিব মাত্ৰ মিত্ৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হলে নহব যেতিয়ালৈকে আমি নিজকে আৰু সবল কৰিব নোৱাৰো আমি নিজৰ বন্ধুসকলকো সহায় কৰিব নোৱাৰিম তো বন্ধুসকলক সহায় কৰিবলৈ হলে আমাৰ লগত মিত্ৰতা কৰা ৰাজনৈতিক দল সংগঠনক সহায় কৰিবলৈ হলে প্ৰথমে আমি নিজকে আৰু বল কৰাটো উচিত অসমত দেখা গৈছে যে অখিল গগৈও বিভিন্ন বক্তব্য মধ্যপ্ৰদেশলৈ মিটিঙৰ পৰা ওলাই আহিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিখন সভা হৈছিল
তাত সেইটোৰ ওপৰত কি ক'ব? ইতিমধ্যে আমি কৈছো তাৰ পিছতো আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এই সম্পৰ্কত নিজৰ ৰায় দিছে আৰু এটা প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো আগুৱাই লৈ যোৱাটো আমাৰ চেষ্টা থাকিব। দ্য নিউজ প্লাছৰ এই বুলেটিনৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গুজৰাটত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আজি কেনেদৰে ভাষণ প্ৰদান কৰে। और गरीब को गारंटी कौन देगा? तो गरीब मां के बेटे ने तय कर लिया कि हर गरीब की गारंटी मोदी देगा। मोदी ने ऐसे गरीब की गारंटी खुद ली और मुद्रा योजना शुरू की। आज मुद्रा योजना से करीब करीब 32 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जो हमें रोज गालियां देते रहते हैं ना, उनको जब 32 लाख लिखना है तो कितने जीरो होते हैं ये भी समझ नहीं है। ये जीरो सीट वालों को ये समझ नहीं आएगा। 32 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी को दिए गए हैं। मोदी ने गारंटी ली है। साथियों, रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे साथियों को सहायता देने वाला भी पहले कोई नहीं था। वो बेचारा सुबह अगर सब्जी का ठेला चलाता है तो किसी साहूकार से 1000 रुपये लेने जाता था। वो 1000 लिखता था, 900 देता था। वो दिन भर मजदूरी करके कमा करके शाम को जब पैसे देने जाता था फिर वो 1000 मांगता था। अब बताइए वो गरीब बेचारा क्या कमाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? हमारी सरकार ने स्वनिधि योजना से उनको भी बैंकों से मदद दिलवाई। फुटपाथ पर बेचना रहा, लारी में माल बेचवा वाला, बता ने इस वर्ष के बजट में तो ऐसे साथियों के लिए हमने एक विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই লক্ষ্য বান্ধি লৈছে 2047 আৰু দিল্লীৰ বিকাশৰ বাবে, দিল্লীৰ মহিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে, দিল্লীৰ ছাত্ৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে, দিল্লীৰ মহিলাসকলৰ বিকাশৰ বাবে কেনে ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো। पर आज इस वुमेन्स डे पे मैं आप सबको ये कहना चाहती हूं कि स्काई इज अ लिमिट। बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ। जहां तक आप सोच सकती हो आपके लिए सब आयाम खुले हैं। एक समय था जब ये कहा जाता था बेटी बचाओ। यस ऑफ कोर्स वो समय रहा है देश में, और हो सकता है देश के कुछ कोनों में आज भी हो। आज भी लोगों की मानसिकता में है कि भाई बेटी हो गई, मुंह लटक जाता है अगर दूसरी बेटी हो जाए तो। पर फिर भी उस लेवल को कहीं ना कहीं हमने क्रॉस कर लिया है। लोगों ने इस बात को अपना आत्मसात कर लिया कि कोई नहीं, बेटी है, दूसरी भी है, कोई बात नहीं। फिर हमने कहा बेटी पढ़ाओ। यस ऑफ कोर्स उस चीज में भी हमारा देश अब काफी आगे बढ़ गया है। ना केवल देश में, हम अपनी बेटियों को विदेश में भी भेजा के पढ़ाते हैं। तो बेटी पढ़ाओ पे भी हमारी बहुत अचीवमेंट्स समय के साथ साथ हुई है कि आज हमारी बेटी जितना पढ़ना चाहती है, पेरेंट्स सोचते हैं कि यदि रिसोर्स हैं तो इसको पढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन, तुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन। थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाते हैं, ये फील्ड तो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, आप तो टीचर बन जाओ तो ज्यादा अच्छा है, टाइम से घर आओगी, घर गृहस्थी भी संभाल लोगी। ऐसा थोड़ा सा पेरेंट्स के दिमाग में आज भी रहता है। पर जब तक मेरे जैसे लोग पेरेंट्स बनेंगे, बन गए, और आप जैसे लोग पेरेंट्स बनेंगे, तब तक और चीजें ठीक होती जाएंगी। फिर तीसरे मुकाम पे आए कि बेटी बढ़ाओ। यस, इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि बेटी को बढ़ने का मौका देना है, और वो मौका हम सबको ही देना है। यदि आज हम उसके लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन करेगा?
ये काम वो काम है जो सरकारें नहीं करने वाली। सरकार अपॉर्चुनिटी दे सकती है, पर उसको मौका आपने देना है। वो मौका देने के लिए उस परिवार की माँ, उस सोसाइटी में टीचर और ऐसे सामाजिक लोग जो उन बेटियों को मौका दें कि बताओ तुम क्या करना चाहती हो। संस्था के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से उसे काम मिले, वो आगे बढ़ सके। और बाकी बची बातें करनी है हम सबको, आपको, खुद को, स्वयं को, कि मुझे करना क्या है, मैंने अपने जीवन में अपने लिए क्या सोचा है। और मैं सच बता रही हूं कि जितना आप सोचोगी उतना ही आगे बढ़ती जाओगी, बढ़ती जाओगी और बढ़ती जाओगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जैसे प्रेस्टिजियस राज्य की मुख्यमंत्री बन पाऊंगी। मुझे नहीं पता मोदी जी ने मेरे लिए क्या देखा, पर मुझे इतना पता है कि ये जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया है, ये देश की हर बेटी का सम्मान है, हर बेटी का। और एक मौका मिलना चाहिए बेटियों को, बस दे कैन प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को वो प्रूव कर सकती है, उसे मौका देने की जरूरत है। आप छोड़िए कुछ चीजें हमारे ऊपर, हम करके दिखाएंगे। आज कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें बेटियां आगे नहीं है? जब हम बात करते हैं रिसर्च सेंटर की, तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा साइंटिस्ट बेटियां हैं। अभी पीछे इतना सब कुछ स्पेस की चीजें आ रही थी, तो मोदी जी ने जब इंट्रोड्यूस कराया तो बहुत सारा जो विंग था स्पेस सेंटर का, वो सब वुमेन लेड कर रही थी। आज गवर्नमेंट जो है वो हम बात करते हैं कि वुमेन लेड गवर्नमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट। आज सिंबॉलिक चीजें नहीं चल रही हैं कि सिंबॉलिकली आपने कह दिया कि हाँ भाई लड़कियों का काम तो रंगोली बना दो, स्वागत कर दो, टीका लगा दो। नहीं भाई, उससे आगे बढ़ गई हैं बेटियां। आज वो बजट पेश करती है निर्मला सीतारमण के रूप में। आज देश की रक्षा कर सकती है, आज विदेश विभाग संभालती है, आज हर विभाग की हेड के नाते, आज पुलिस में, आज एडवोकेट के नाते, आज हर फील्ड में एक बहुत बड़ा स्पेस महिलाओं ने, लड़कियों ने अपने लिए बनाया है। और ये हम सबके अंदर की ऊर्जा है। केवल 8 मार्च सेलिब्रेशन ही वुमेन्स डे नहीं है, हमें वुमेनहुड को सेलिब्रेट करना है, अपने लिए सेलिब्रेट करना है कि यस आई कैन, मैं कर सकती हूं और मैं करके दिखाऊंगी। और यही विश मैं आज आप सबको देना चाहती हूं कि आप सब वो लोग हो जो देश का नाम बहुत रोशन करने वाले हो। आज से सोचना शुरू करो, करना क्या है, किस जगह जाना है, मेरी मंजिल क्या है, और पा लोगी पक्का, मैं आपको बताती हूं। मुख्यमंत्री के नाते आज दिल्ली में जब मैं खड़ी होती हूं तो मैं ये चाहती हूं कि दिल्ली की हर बेटी को आगे बढ़ने का मौका मिले, उसे अपने पंख फैलाने का मौका मिले, उसको दिल्ली में सुरक्षा मिले, उसे दिल्ली में शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। तो दिल्ली की बेटी चिंता मत करना, आपकी मौसी बोल दूं, आपकी दीदी, आपकी मौसी, आपकी बहन आपके साथ है। जो कुछ भी आपके सजेशन दिल्ली सरकार के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आप क्या चाहती हो दिल्ली से, कैसी दिल्ली में रहना चाहती हो, क्या आपको लगता है, जरूर आपसे मैं बात करूंगी। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये सरकार जो इस बार की है वो आप लोगों ने चलानी है, आपके माध्यम से मैं चलाने वाली हूं। इतना मैं आपको इंश्योर करती हूं कि मिलके दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे, समृद्ध दिल्ली बनाएंगे, सुरक्षित दिल्ली बनाएंगे और स्वस्थ दिल्ली बनाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को आज के इस कार्यक्रम की फेम फाउंडेशन को बहुत बधाई, धन्यवाद चंदन भाई को, हमारे विधायक जी जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। मिलते रहेंगे
और मेरे लायक जब भी जो भी हो, सरला जी आप हमेशा इनवाइटेड हैं, आप मेरे लायक जब भी काम हो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी वुमेन्स डे। অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো। আমেৰিকা এয়াৰলাইন্সত এইবাৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল যিটো ঘটনাই আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। এগৰাকী মহিলাই প্ৰায় 25 মিনিট সময় হঠাৎ নগ্ন হৈ পৰিল, নগ্ন হৈ ঘূৰি ফুৰিলে। কিন্তু তেনে পৰিস্থিতি কিয় কৰিলে, মানসিক সন্তুলন হেৰুৱাই তেনেকুৱা পৰিস্থিতি কৰিলে নে চালানৰ পৰা বাচিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে, সেই সন্দৰ্ভত বিমান কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।